स्टार्ट द डिक्टेशन फर्स्ट, और उसके बाद आपको आउटलाइन मिल जाएंगी, डिफ़िकल्ट आउटलाइंस। और कोई आउटलाइन चाहिए और कुछ इसमें कुछ आप अपना कमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब से आपको वही आपको वो एलिजिबल है कमेंट करने के लिए। और कंटेंट पसंद आता है इसको लाइक कर दीजिए, ताकि हम कुछ ना कुछ और सुधार करके और ज़्यादा मात्रा में आपको कंटेंट्स देते रहें। और आपको बता दें कि ये जो आपको एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, ये कवर करती है जो भी एग्ज़ाम में आने वाला होता है, वो सारे टॉपिक कवर करते हैं, सारी जो जहाँ आस्पेक्ट हैं। देखो 3 तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिए, मतलब जो पेपर सेट होता है आपका, एक डिक्टेशन सेट होती है किसी रिपोर्ट से, ठीक है, प्रेसिडेंट स्पीच से या पार्लियामेंट डिबेट से। उन सब में क्या होता है, वो सारे रिलेटेड होती हैं, जो भी हमारे आसपास कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं, उनकी वही चीज़ उनमें डिस्कस होती है। और वही हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। और आर्टिकल हम हिंदू से लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्टैंडर्ड का है, ठीक है। ज़्यादातर ऑफिसर बनने से पहले लोग इन्हीं को पढ़ते हैं। तो ये हमने हिंदू से एक डेली डिक्टेशन रखी है। डिफ़िकल्ट होती है इसलिए स्पीड मॉडरेट रखते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जो डिफ़िकल्ट आउटलाइंस को लेकर आप पेपर डिक्टेशन लीजिए, फिर आउटलाइन को देखिए, आउटलाइन की प्रैक्टिस करिए, और फिर इसको बार बार लीजिए, ठीक है। तो आपका स्पीड डेवलप हो जाएगा और किसी भी तरह के पैसेज को टैकल करने में आपको मदद मिलेगी। स्टार्ट। 5 seconds. Delhi and parts of the surrounding states of Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh encounter their annual air quality inflection point. This is the time when the southwest monsoon has receded, and with it, the great drafts in the upper atmosphere that normally flush out pollutants from the gamut of anthropogenic activities such as construction, driving, power generation, and the burning of agricultural residue. Through the years, there have been studies commissioned and executive action initiated to study, acknowledge, and address the crisis. The science is also fairly clear on the relative contribution of pollutants and the limits of corrective intervention in the face of adverse meteorology and the disruption to economic life that this can entail. The consequence of this is that the air pollution crisis has now devolved into a stalemate. The Commission for Air Quality Management (CAQM), which is tasked with addressing the causes of air pollution in Delhi and the adjoining states, is now a body packed with expertise but whose powers are limited to evoking and recommending grades of measures depending on the degree of deterioration in air quality. While the CAQM pointed out as recently as October 31 that the daily average air quality in Delhi from January to October of this year was the best in the last 6 years, it elides the fact that the number of days in November when air quality becomes severe over 450 AQI has remained roughly the same. Thus, in 2022, the AQI was in the severe category in the first fortnight of November for 3 days, the same as in 2021, 2020, and 2019. While there is great awareness and action to curb the sources of pollution, November, which has in recent years emerged as the critical month for pollution, remains to be tamed. Incidents of stubble burning in Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh this year have been roughly half that when compared to previous years, though the weeks ahead are expected to see more such activity. While the measures earlier have seen an institutionalized response to tackle
air pollution, it is now time for a concerted approach to address these challenges of November. Beyond stubble burning, this means addressing the more daunting challenges of vehicular pollution and construction dust. While urban Delhi could have always blamed the distant farm fires for the pollution crisis, tackling November may mean hard measures and greater inconvenience. Besides, bodies such as the CAQM have to assert their independent credentials and ensure greater coordination and compliance within Delhi and the surrounding states to address the challenge. Thank you. Now let us see the outlines, difficult outlines, shortened outlines, encounter, inflection, प्रेसिडिएट इसमें ये डी है, हाफ किया थोड़ा टेढ़ा हो गया है, गैमेट, एटमॉस्फेयर, इन रेजिड्यू, इनिशिएटेड, acknowledge, intervention, adverse, meteorology, disruption, devolved, stalemate, adjoining, evoking, deterioration, elites, severe, curb, emerged, remains, ये थोड़ा हुक छोटा रहेगा, tamed और stubble, हाँ, tamed, stubble, concerted, अप्रोच, डांटिंग, चैलेंजेस, इनकन्वीनियंस, ये कंस्ट्रक्शन है, पूरा लिखना चाहें तो और करके हमने ये लिखा है, इनकन्वीनियंस पूरा लिख सकते हैं, नहीं पढ़ा जाए तो असर्ट एस है लाइन से ऊपर और रे हाफ किया गया, क्रेडेंशियल्स।